Okay, we are live. And just first of all, tell me, am I like audible to you? Because I have changed some setup. I have added another camera and all, and that's why it got a little bit late. Okay, and I can definitely see all the excitement on the screen on the chats. Let me just quickly say hi to all of you. Hi Aryan, hi Aviral, hi Saina. Okay, and Ritesh, best. Aryan is also best, and I can surely tell this. Aryan, I really like your efforts in coding, in starting your own channel. But you have to take your own steps. Okay, first of all, this session is going to be great because this time I have come with a mind-blowing trick of an animation. Yes, and it's a trick on animation that you have never thought before. I am sure आपने कभी नहीं सोची होगी. Now I'm going to introduce Game Lab as well today. Okay, so today we are also going to study Game Lab as well as the Sprite Lab. कैसा रहेगा? You tell me. Our favorite teacher. Thank you so much. And I am blessed to have these students with me. Let's start the session. Okay. Now see, first of all, let me just show you what we can do here. Okay. So you can see my screen. And my screen is visible to you. Alright, now this animation is made in code.org's Sprite Lab. Can you guess the code? मैंने एक वो भी डाला था. If you can guess the code or not. Sign up. Okay, now this is not made in Game Lab. Game Lab में बनाने बहुत simple है, पर क्या हम इसे Sprite Lab में कैसे बना पाएंगे? Let's start making that without any delay. Let's open code.org and today sign in first. You got to sign in and then click on create Sprite Lab first. Okay, now hear me very carefully. We are going to do an animation in Sprite Lab. First, rename your project animation trick. Okay, save. Now see, you saw these bubbles. They are coming, है ना? They are coming and going. हमें ऐसा कुछ बनाना है. First of all, you can see the screen is pink. Let's make the screen pink with its color. You can take any color. That's on you. I'm going to take this color. Okay. Now I need to take that bubbles. ठीक है? वो bubbles मेरे को लेने हैं. अब वो bubbles कहाँ से आएंगे? वो bubbles हमें copy paste. See, if I click on this one, मेरे को तो ये upload option आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये upload option नहीं आ रहा था. ठीक है? So what we can do one thing. We can open code.org and we can go on Game Lab. And Game Lab में वहाँ पे हमारे पास ये bubble है, animation plus, and search for that bubble. कहाँ मिलेगा? ये मेरे को देखना पड़ेगा. Do anybody of you have the idea of where is that bubble? Tell me in the chat. I am looking at it. Okay, so let me just search bubble. हाँ, I got it here. क्या ये हमारे पास code.org में आ रहा है? हाँ, code.org में नहीं आ रहा. ये Game Lab में आ रहा है. Let me take this. Now see one thing. ये ऐसे अपने आप bubble हो रहा है, अपने आप हो रहा है. How? Because it has frames और ये अपने आप animation create कर देता है. Now we need to copy these frames. Let's get on the code.org. Now I'm going to tell you the trick how to copy and paste when they have removed the feature. Okay. So now I'm going to select this rectangle selection tool and then I'm going to select the whole area very carefully. And then by placing this hand over, I will click Ctrl plus C. Copy हो गया.
and then I'll come back to my code.org. I'm going to upload a new blank page and I'll just paste it here. आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि जितना पेज कॉपी करते हैं ना हम, जैसे देखो इनका पेज इतना कॉपी था, दिस इज इन अ रेक्टेंगल और ये हमारे पास एरिया था स्क्वायर में, तो ये उतना ही आया है, ठीक है। दिस इज द डिसएडवांटेज हियर। नाउ इफ आई ट्राई टू कॉपी राइट हियर, चलो, and then I need to do the same thing because there are 4 costumes. So one costume is done. Now it's for the second costume. Select the whole area, place the palm, Control C, come back to code.org, Control V. We have it here. So costume 1, costume 2. Now it's turned from costume 3. Costume 3 is here. Selecting. This is easy, but this is could also be lengthy for anyone who's doing it first time. मेरे लिए तो बहुत quick है. Just select the whole area, place the palm, Control C, come back, Control V. Right click करना बहुत जरूरी है. Right click on the empty page, then Control V. Okay. Let me see if I crop it. Yeah, I crop this one, so I need to crop these one as well. Crop, crop, crop. Okay, done. Let's come back to code. Now मेरे को अपने make a new sprite करना है, and I made it. Here I got it. But now I want to change the costume. Okay, if I make a new sprite and I just make one हो गया, second पे try करते हैं. We need to take care of these things also. ये one था, ये second होना चाहिए. And when we run it, तो ये तो एक ही picture आए, दोनों तो आए नहीं. या कैन यू नोटिस कि तो दोनों ही ओवरलैप कर गए. यू कैन सी इफ आई रिमूव दिस वन, ये दोनों ही ओवरलैप कर गए थे, है ना. सो नाउ वी नीड टू मेक अ ट्रिक ऑन इट. लेट्स सी व्हाट वी वांट. हम चाहते हैं कि इसकी कॉस्ट्यूम बदलती रहे, तो क्या हम टाइम इवेंट ले आए. This when run event is not working at all, so let's take another event. Okay, so now this coding is really simple and you can like code it in less than 5 minutes. I am guarantee shoring this. Now see, ये अगर मेरा ये first है, first costume, then मेरा second costume आने वाला है. Then I'm going to get another time event and I'll have it here. Let's see, इसको मैं 1 second करती हूँ, इसको मैं 2 second करती हूँ. Let's see what happens now. 1, 2. Oh, they came. Actually, they came. First of all, मेरे को इसकी लोकेशन बदलनी पड़ेगी, वो मैं बदलूंगी बाद में. Second of all, ये तो बहुत धीरे आ रहे हैं. 1 second and 2 seconds है तो बहुत छोटा time, but it is taking a lot of time here. What we can do now? Okay, let's see. If I shorten this time, अगर मैं इसको 1 second की जगह half second कर दूं, या फिर एक चीज आपने नोटिस करी थी, यहाँ पे लिखा है add frame, add a new frame. ठीक है, तो क्या मैं इस फ्रेम का यूज कर सकती हूँ, विच इज हियर. आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, वी हैव फ्रेम्स. अब नोट दिस थिंग वेरी केयरफुली. 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स होते हैं. देयर आर 30 फ्रेम्स इन 1 सेकेंड. फ्रेम को आप मानो ऐसे जैसे कि वो पेजेस है फ्लिप बुक के. तो ऐसे मानो कि फ्लिप बुक हम फ्लिप कर रहे हैं और 1 सेकेंड में हमने 30 पेजेस फ्लिप कर दिए. यही तो हमारा ट्रिक होती है एनिमेशन की, टू फ्लिप द कांस्टेंट पिक्चर्स बहुत जल्दी एंड इट लुक्स लाइक इट इज मूविंग, राइट. So that is only we need to do. I change this into frame. Let me make it 1 frame and let me make this frame and let me change it to 10. अभी मैंने आपको बताया कि 1 सेकेंड में 30 और 60 फ्रेम्स होते हैं. तो 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स होते हैं, तो मैं 1 सेकेंड पे 1 फ्रेम लाऊंगी, एक पिक्चर लाऊंगी, 10 फ्रेम पे दूसरी पिक्चर. लेट मी कॉपी पेस्ट दिस वन फॉर 20th फ्रेम and another picture. कौन सी वाली? Very carefully choose the 3rd one. And same for the 4th one. Copy paste and for the 30 frame. तो अब ये 1 सेकेंड में ही
इन सब का काम हो जाएगा. Oh, I have done one thing wrong here. चलो, अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पिक्चर सेलेक्ट करूँ बहुत केयरफुली, लेट मी डू वन थिंग. मैं इसको अलग अलग सेट कर देती हूँ जस्ट टू सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर. 1 2 3 and 4. ये हमें स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहे? चैट में मेरे को बताओ. लाइक समवन टेल मी इन द चैट जब मैं ये लोकेशन ऑन कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट हियर, सो ये मेरे को क्यों नहीं दिख रहे? Aviral guessed the code. I really want to see it in the Discord. By the way, you need to show your projects to me on the Discord. ठीक है? और एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगी अभी. अगर मैं इसको यहाँ पे सेट करती हूँ तो why they are not visible? I'm waiting for your answers. Aviral, Saina, Sunita Jaiswal. Sunita, okay, tell me your name. I think I am getting a name. Alright, so now let me tell you. ये इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि इनका इवेंट अलग है. ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखती तो मेरे को ये दिख रहा है, अगर मैं इसे भी यहाँ रखती तो ये मेरे को दिख रहा है. बट नाउ द इवेंट इज डिफरेंट. वो इवेंट अभी तक हुआ नहीं है तो वो हमें नहीं शो हो रहे. दिस इज द करेक्ट आंसर. अगली बार कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे ना? ओके, so now let me run it. Let me see if it's happening like perfectly. Let me see if they are like moving rapidly. 1 2 3 run. Okay, 1 2 3 4 ये आ रहे हैं. Let me do one thing. इन सबका लोकेशन मैं 200 पे रखती हूँ. That means सबको एक ही प्लेस पे रखती हूँ ताकि वो लगे तो कि एक के बाद एक आ रहा है. तो मैंने 200 यहाँ पे सबको एक्सचेंज कर दिया. Let me see now what changes happens. Okay, वो सब आए एक ही जगह पर, बट एक के ऊपर एक आ गए. Now how to cure that? Now one thing more I want to show you कि जब हम यहाँ पे कॉस्ट्यूम में आके कॉपी करते हैं इन चीजों को तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आती है. पिक्सल, कॉलम, रो 1, RGB 0. कैन यू सी दिस? वो इस फॉर्मेट में आती है. सो दैट्स व्हाई हम अगर इंटरनेट से कोई चीज लेके आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो इसीलिए पेस्ट नहीं होती क्योंकि ये हमारे पास इस फॉर्मेट में नहीं है. अगर मैं ये सेम फॉर्मेट आपको डिस्कॉर्ड पे दूं तो वो आपको पेस्ट हो पाएगा जो मैंने पहले दिया है. ठीक है, नाउ सी व्हाट वी नीड टू डू. मैंने रन किया, वो एक के ऊपर एक आ गई. तो क्या मैं ऐसा काम करूं कि जब पहला आ जाए और दूसरे की बारी आए तो मैं पहले वाले को रिमूव कर दूं? Let me see if I can do it. Let me take a remove block and let me put it here. And meanwhile, let me put it with these two also. But very carefully now what I need to do here is to select the right picture. अभी फर्स्ट वाला मेरा ये था तो मैं रिमूव भी यहाँ पे फर्स्ट वाले को करूंगी on the second वाला फ्रेम. Take care of this, okay? And then अभी सेकंड मेरा ये वाला आ रहा है तो मेरे को रिमूव थर्ड पे जाके सेकंड वाले को रिमूव करना है. सिमिलरली फोर्थ पे जाके थर्ड वाले को रिमूव करना है. लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ और नॉट. इट इज वर्किंग. कैन यू सी? इट इज वर्किंग. या यू कैन डू वन मोर थिंग. यू कैन रिड्यूस द फ्रेम नंबर्स. तो ये हमारे पास ज्यादा जल्दी दिखेगा. ओके, बट कैन यू सी? ये तो मेरा आता जा रहा है. मैं इसको रन रीसेट नहीं कर रही, ये बस आता जा रहा है. पर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है. यहाँ पे मैं एक बार रन रीसेट करती हूँ, एक बार आके खत्म हो जाता है. हाउ वी कैन मेक दिस लाइक फॉर इन्फिनिटी? हाउ कैन वी कैन मेक दिस कॉन्टिन्यूअस? कैन यू टेल मी, एनी वन ऑफ यू? देखो, अभी आपने इतना सारा ब्लॉक प्रोग्रामिंग सीख लिया है मेरे से. यू मस्ट बी एन एक्सपर्ट नाउ. ठीक है, और अगर नहीं हो एक्सपर्ट तो आई वांट यू टू बी एन एक्सपर्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई जूम पे क्लासेस होती है क्योंकि आप बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते एंड बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता पाती. राइट, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ जूम क्लासेस. Okay, one thing. Second, I have to make one more announcement here that whoever lives in Delhi
I am going to be available in Pitampura Center coding blocks के लिए. Actually one student was asking me कि क्या ये offline batches नहीं start होंगे कभी भी. So I said offline batches हो सकते हैं but क्या student center पे आ पाएंगे? क्योंकि as Saina said that she is from Goa. तो फिर अभी वो गोवा से तो नहीं आ सकती बट जो दिल्ली में है वो जरूर आ सकते हैं. So अभी मैं दिल्ली I'm going to be there in Pitampura Center. Whoever wants to come, they can come and clear their doubts. Okay, चल, let's move ahead and let me see the charts. For loop, Abidal is saying for loop. We can do the for loop, but will it be forever? I don't think so. Hi Bhavesh, how are you? You are doing great. Hi Satvik. We can loop any use, but what if I tell you our next trick up here? Let me tell you one more trick here. अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम टाइम पे काम कर रहे हैं. 1 frame, 10 frame, 20 frame, 30 frame. That is 1 second. अभी टाइम कैसे होता है? क्या ये हमारी क्लॉक पे चलता है? क्या ये हमारे प्रोजेक्ट को रन रीसेट करने पे चलता है? अगर मैंने रन किया तो मेरी क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी. क्लॉक हमारी चलती रहेगी. क्या मैं अपनी क्लॉक को बार बार रीसेट कर सकती हूँ? कैन आई रीसेट इट? हाय भावेश, आई एम फाइन. नो साइना. रिपीट लूप वी कैन डू बट फॉरएवर हम कैसे करें? हाँ, एक तरीका है कि अगर हम इसको बिहेवियर में बना दें. बट आई एम गोइंग टू टेल यू अ बेटर तरीका. दैट इज गो इन द वर्ड एंड देयर इज अ ब्लॉक लास्ट फोर्थ. दैट इज रीसेट टाइमर. किसी ने कभी सोचा था ये? Isn't this mind blowing? This tiny little block can modify your game to next extent. Now हमारा timer reset हो जाएगा और फिर से 1 2 3 4 आएगा. How about this? Let me run this and see if it's working fine or not. It is working fine. Oh, but can you see यहाँ पे कुछ constant सा है? ये जा ही नहीं रहा, ये move नहीं हो रहा. So what it could be? Any guesses? One thing it could be this first sprite जो हमने अभी तक remove ही नहीं करी. तो हम क्या करते हैं? Let me take one more remove block and remove this as well on the first frame. ये जो हमारी last sprite है जो हमने remove ही नहीं करी, इसको remove कर देते हैं. Remove this sprite and then they will start again. I am going to do a little change here. I am going to have it above. पहले remove होगा फिर make a new होगा. Now it is better. Let me reset and run. Isn't this perfect? And it will go on forever. Isn't this mind blowing? Have you ever thought about it? Yes, Vishal, you have a doubt, you can ask me here. Okay, now let's come to the game lab part. Another animation. Let's rename it. Animation number 2. Okay, now same चीज मेरे को करनी है. अब you can see ये तो अपने आप मूव हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे लिखें कैसे? This is an empty screen. Now this session is for all of you who have never ever like done game lab. सबके लिए है जिसने कभी भी game lab नहीं किया. So now what we need to do? Let's compare these things. मैंने स्टार्टिंग में क्या किया? मैंने एक बैकग्राउंड कलर लगाया. So we need a background color. Hi Arnav Tyagi, nice to see you here. Saina, your game lab is not opening. You have to do one thing. Close all the tabs of code.org and then try to sign in and open it again. Okay. अच्छा देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था? Make a new sprite किया था. यहाँ पे जो हम फ्रेम चेंज कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली है. तो what I can do, I can just make a new sprite under when run. Let's start making it. If I make a new sprite here, so I can go in the sprite section first of all. Okay, go in the sprite section and then there are 2 blocks. पहले दो. तो यहाँ पे ये दोनों क्या कह रहे हैं? पहला ब्लॉक कह रहा है कि sprite की लोकेशन क्या होनी चाहिए.
ठीक है। इफ आई यूज दिस ब्लॉक सबसे ऊपर, तो ये स्प्राइट का पहले नाम देना है, ओके। और अभी हमारे पास, अगर हम एनिमेशन में जाएंगे तो हमारे पास स्प्राइट का नाम क्या है, दिस बाबली, ओके। सो मैंने ये स्प्राइट ले ली थी, यहाँ पे कोई भी वो नहीं होते तो आपको लेना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स गेट बैक टू कोड एंड लेट्स राइट हियर bubble, or I can do one thing, I can just rename this one as bubble. ठीक है। Now come back to code and I can do this bubble, okay, done, okay। हमें सेम नाम पे काम करना है, तो नाम ले लिया और यहाँ पे 200 लोकेशन भी क्रिएट हो गई, राइट। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे 200 लोकेशन पे एक हमने अपनी जगह, लाइक ऐसे होता है ना, हम अपनी घर का प्लॉट हम वहाँ पे रजिस्टर कर आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक घर का प्लॉट रजिस्टर हो चुका है, तो इस लोकेशन को अभी एक्वायर कर लिया गया है इस बब वेरिएबल ने। नाउ अब ये वेरिएबल है क्या, इसको हमें कोई शेप देनी पड़ेगी, कोई पिक्चर देनी पड़ेगी, तो हम सेम नाम यूज करेंगे। Now this is a variable, and remember I always told you that variable is like a box, an empty box in which we can put anything. So now ये bug नाम का variable लिया मैंने, और animation का arrow आप जब क्लिक करोगे तो ये नाम आ जाएगा। Now you can also rename this। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नेम और वेरिएबल नेम का कोई कनेक्शन नहीं है, हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बबल सेलेक्ट हो गया, लेट मी रन, नथिंग की, क्यों, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जगह तो दे दी लेकिन वी डिडंट ड्रॉ इट एक्चुअली। तो ड्रॉ करें, लेट्स गो टू द वर्ड एंड यू हैव दिस ड्रॉ स्प्राइट, लेट्स पुट इट इनसाइड, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट नाउ, ओके ओके ओके। कैन यू सी वन थिंग हियर कि सेम वही चीज हो रही है, सेम वही चीज हो रही है जो पहले हो रही थी। यहाँ पे जब मैंने रिमूव ब्लॉक नहीं लगाया था कि एक के ऊपर एक आते जा रहे थे, एक के ऊपर एक आते जा रहे थे, सी एक के ऊपर एक आ रहे हैं वो। ना इस चीज को कैसे ठीक करें हम, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड कलर भी लगाया था, तो एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी लगाते हैं, ओके ओके। बैकग्राउंड कलर ड्राइंग में जाके मिलेगा, एंड इफ आई प्लेस द बैकग्राउंड कलर हियर, लेट मी राइट पिंक हियर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे and reset run, okay, pink color आ रहा है but still हमारी problem solve नहीं हुई। Now how to solve this problem, listen very carefully what we are going to do। अभी यहाँ पे हमारे sprites बनते जा रहे हैं एक के ऊपर एक पीछे पेपर आ गया, उसके ऊपर मैंने अपने स्प्राइट का स्टिकर पेस्ट कर दिया, और मेरे पास बहुत सारे स्टिकर हैं अपने स्प्राइट्स के, तो मैं उस पेज के ऊपर, स्प्राइट के ऊपर एक और स्टिकर, एक और स्टिकर, एक और स्टिकर पेस्ट करती जा रही हूँ, ठीक है। पर मेरे को क्या चेंज करना हो, यहाँ पे मेरे को ये चीज़ चेंज करनी है कि मैं एक पेपर लाई, मैंने उसमें स्टिकर लगाया, ना दूसरे स्टिकर के लिए मेरे को एक और पेपर लाना पड़ेगा और फिर उस पर स्टिकर लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स वी नीड अ क्लियर बैकग्राउंड बिफोर मेकिंग अ न्यू स्प्राइट। अब ये जो ग्रीन कलर का ब्लॉक है, दिस इज योर लूप, दिस इज योर लूप। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये लूप के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो बार बार होगा। तो फॉर नाउ ड्रॉ स्प्राइट्स हो रहा है बार बार, मतलब अब यू कैन सी बार बार ड्रॉ स्प्राइट्स कर दे रहा है। हमें क्या करना है, ड्रॉ स्प्राइट्स करने से पहले ये जो बैकग्राउंड हमने ऊपर लगा दिया था ना, इसको ड्रॉ करने के जस्ट पहले लगा दो। What do you think? Will it work now or not? Are you understanding this concept? अगर जरा सा भी डाउट हो रहा है तो मेरे को बताओ, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, okay? So now this is done for here. I can run it and you can see this magic. It is happening. Now this is also happening here. It is also happening here. They both are same, okay? These both are absolutely same concept, same one animation on two platforms using similar codes, which will blow your mind, and it is less than 5 minutes. I think you can do it in 2 minutes only, because हम जाने में time लगा obviously, है ना? So now tell me if you have doubts now, and tell me if you like
this project, then tell me this in the comments, please. I am just really happy to see all these comments of you. Okay, also like this video, share this video to your friends and family, and obviously friends को share करो क्योंकि उन्हें भी coding आनी चाहिए. एज रिस्ट्रिक्टेड, अच्छा साइना, ओके, आई थिंक इसमें एज रिस्ट्रिक्शन है 13 और 14 इयर्स की. सो ओके, तो फिर अगर आप छोटे हो तो वो नहीं होगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक अ न्यू code.org और उसमें आपको अपना डेट अलग डालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अपने मम्मा की गूगल से साइन इन करो, उससे बनाओ. थैंक यू रितेश. हाउ टू शो इट ऑन डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड पे आप आ जाओ. डिस्कॉर्ड पे आपके पास आएगा code.org का डाउट चैनल, वहां पे क्लिक ऑन शेयर, ठीक है, कॉपी द लिंक ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कॉपी हो जाएगा एंड डिस्कॉर्ड पे आके पेस्ट कर दो फॉर गेम लैब एंड फॉर द स्प्राइट, फॉर द स्प्राइट लैब क्लिक ऑन शेयर and copy the project from here as well, then paste कर दो, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, हमारे पास पूरा लिंक बन के आ जाएगा. पेस्ट इट ऑन द डिस्कॉर्ड या फिर टेलीग्राम पे भी आप पेस्ट कर सकते हो, दोनों सेम ही है. I'll check it anywhere. Okay, now this session is done. I'm really glad to like teach you all these creation. Ananta, I will. Okay, chalo. That's it for today. Okay, also yeah, I just told you that Pitampura pe if anyone can come, so you can come, I think till 5 p.m, ठीक है, 5 बजे तक you can come and see me, and if you have any doubt you can surely ask. Also, if you want to learn Python, if you want to learn Game Lab, so you can also approach me for that, for the YouTube session as well. Tell me the new ideas, I'll make sessions, or as well with the paid batches. इसको paid पढ़ना है, they can clear their doubts on the Zoom. That will be it. Okay, that's it for today. All my love to all my students, and I'll see you in the next session. Bye bye. Like this video and share it, of course. And yeah, I need to thank all of you for making us 13,000 subscribers. That is heartwarming, but let's see, let's spread this channel all over and make like increase the subscriber even more. Okay, okay, bye bye.